Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are well. Welcome to the class. I am Momna and I will be your instructor for O level maths. And today we will be discussing the first chapter for O level maths, which is numbers. Now you might be thinking what exactly is there to discuss about numbers. हम सबको पता है numbers क्या होते हैं. All of us are familiar with numbers. So why a separate chapter? Well, believe it or not, if you get this first chapter right, it will form a foundation for all other chapters that will come after this. It's not a very tricky chapter, but make sure that you pay attention and you get it right. Now, like I said, सबको पता है numbers क्या होते हैं. ठीक है. In this chapter, we are basically going to categorize those numbers into different groups or different sets. I'm going to start off with the first set, that is the set of natural numbers or the group of natural numbers. अब natural numbers आपके पास क्या होते हैं? Natural numbers are basically counting numbers. Counting numbers से मतलब है जिन नंबर से आप अपनी काउंटिंग स्टार्ट करते हो. सो व्हेनेवर यू स्टार्ट काउंटिंग समथिंग, डू यू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, डू यू स्टार्ट फ्रॉम वन, और डू यू स्टार्ट फ्रॉम -1, or what is the number that you start with? You always start with 1. Whenever you're going to count something, you start with 1, 2, 3, 4. So natural numbers are counting numbers and they start from 1, 2, 3, 4, 5 and so onwards to whatever number you want to end with. The next group that we will be talking about is the set of integers. अब integers क्या होते हैं? Integers are basically the set of natural numbers, negative natural numbers and zero. Now what do I mean by that? Set of natural numbers हमने अभी पढ़ा है, वो क्या होता है? वो होता है 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Dot dot means that it continues. अब negative natural numbers क्या होंगे? -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन. तो ये आपके पास नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हो गए. इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड जीरो. सो आई एम गोइंग टू ऐड अ जीरो एज वेल. सो इंटीजर्स क्या हुए? -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. नाउ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स, जो अभी तक हमने दो सेट्स पढ़े हैं, सबसे पहली चीज़ क्या है? उसमें नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता, इंटीजर्स में ज़ीरो आता है. Natural numbers are positive, but integers can be negative or positive. ठीक है. So if I ask you which is the greater set, it's going to be the set of integers, क्योंकि सारे के सारे natural numbers आपके set of integers में भी आते हैं. That means all natural numbers are integers, but all integers are not natural numbers. So if a question asks you, for example, आपको एग्जाम में सवाल आता है कि x की एक वैल्यू निकाल दें, given that x is a natural number, and you attempt that question but you're getting two different values of x. एक नेगेटिव आ रही है, एक पॉजिटिव आ रही है. What would that mean? If x is a natural number, that means x is positive. It cannot be negative. So you know which value to pick, which is why I said if you get this chapter right, it will help you save those 1 to 2 marks that students end up losing because of these silly mistakes. Moving on, so your set of integer is going to be -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, 4 and so on. It's continuing from both ends. इस end पे भी वो continue हो रहा है, इस end पे भी वो continue हो रहा है. The third set that I'm going to talk about is the set of whole numbers. Now a lot of students confuse whole numbers with integers. My question is, are integers going to be the same as whole numbers? इफ़ यू थिंकिंग येस दे आर, क्योंकि होल नंबर्स हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. होल नंबर्स होते हैं नंबर्स जो एक फ्रैक्शन में नहीं होते. ठीक है. अगर हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं, दैट मीन्स -4 इज़ ऑल्सो होल नंबर, बट इट्स नॉट ट्रू. होल नंबर्स आर बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ज़ीरो. होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते. होल नंबर्स इज़ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ज़ीरो. सो वी हैव डन 3 सेट्स. होल नंबर्स आपके पास क्या आ जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5. We've done 3 sets. Natural numbers 1, 2, 3, 4, 5. Integers, negative natural, जिसमें आपके negative natural numbers आते हैं, 0 आता है, positive natural numbers आते हैं, and the set of whole numbers. Now if I ask you which is the greatest, a set is basically a group of different objects. तो सबसे बड़ा group या सबसे बड़ा set कौन सा होगा? It is going to be the set of integers. Why? Because उसमें 0 भी है, उसमें सारे natural numbers भी हैं और उसमें सारे negative natural numbers भी हैं. So if I compare it with both natural and whole numbers, it's going to be greater than both. Talk about a slightly more complicated set, which is the set of rational numbers. अब set of rational numbers क्या होते हैं?
It is a set of numbers that can be expressed as a ratio of two integers a and b in the form a over b, where b is not equal to 0. Very complicated, but let's try to simplify it. अब रैशनल नंबर्स होते क्या है? देर आर बेसिकली नंबर्स दैट यू कैन एक्सप्रेस एज अ रेशो और एज अ फ्रैक्शन. लेकिन उस फ्रैक्शन पे कंडीशन क्या है? उस फ्रैक्शन पे कंडीशन ये है कि उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो यहाँ पर हमने ए से रिप्रेजेंट किया है वो भी एक इंटीजर होना चाहिए. इंटीजर का मतलब क्या है? इट कैन बी ऑफ दिस फॉर्म, and the denominator should also be an integer. But there is one more condition on the denominator. That condition is that the denominator, which in this case we have represented by the letter b, the denominator should not equal to 0. अब ये condition हमने क्यों रखी है? ये condition हमने इसलिए रखी है because note a fraction with a denominator equal to 0 is not defined. अगर आपकी फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो है, वो फ्रैक्शन डिफाइंड नहीं होती, उस फ्रैक्शन का इन्फिनिट आंसर आ जाता है. यू डोंट नीड टू गेट इनटू द डिटेल्स, बट ऑलवेज रिमेंबर, इवन इन योर एग्जाम, इफ़ यू हैव an answer that is of the form, let's say 5 over 0 or any fraction but the denominator is equal to 0, then that answer is incorrect. ठीक है, आपके फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर नहीं आ सकता, वो फ्रैक्शन अनडिफाइंड होती है. तो रैशनल नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर्स are of the form a over b, where a is an integer, b as an integer and b is not equal to 0. But अब confusion ये है, can a equal to 0? Yes, a can equal to 0. Let's say I say 0 by 5. 0 by 5 is a defined fraction which is equal to 0. So yes, a can equal to 0. The condition of not being equal to 0 is only on b, only on the denominator. Let's do some examples of rational numbers. So rational numbers के examples आपके पास क्या हो जाएंगे? You can see over here I have written down some examples. Minus 5 by 2 is going to be a rational number. Why? Minus 5 is an integer, 2 is an integer and 2 is not equal to 0. So yes. उसके बाद 10 by 7, 10 आपके पास एक integer है, 7 आपके पास एक integer है and 7 which is in the denominator is not equal to 0. 1 by 3 again, 1 is an integer, 3 is an integer, 3 is not equal to 0. 4 by 2 and so on. So any fraction that you can write of the form a over b, where b is not equal to 0 is a rational number.